Hello guys. So today our topic is how to balance a chemical equation. Oh, so actually I forgot to write chemical equation. I just wrote equation. Okay, so don't focus on the title. Uh, See the inside material. Okay. So first of all, what do you mean by balancing? Balancing means sum of actually balancing means sum of mass of reactant side is equal to sum of mass of product side. Okay, sum of mass of reactant side is equal to sum of product side. Okay, clear? मतलब जो कि रिएक्टेंट की साइड होती है, मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपने पास है एग्जांपल H2 + O2 होता है H2O. ओके, क्लियर? सो तो रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? ये होती है रिएक्टेंट साइड, जो लेफ्ट साइड होती है वो रिएक्टेंट साइड होती है, और जो ये वाली साइड होती है ये होती है प्रोडक्ट साइड. ठीक है, इसे हम रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स कहते हैं, और यहाँ इस साइड पे हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, सो बैलेंसिंग कुछ नहीं होता, जो मास होता है एटम्स का वो इक्वल दोनों साइड, मतलब इस साइड में भी एटम्स का मास इक्वल करना और इस साइड में भी इक्वल करना. ठीक है, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंसिंग करने क्यों है. सब लोग कहते हैं बैलेंसिंग करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? बिकॉज द chemical equation should follow the law of conservation. Because the chemical equation should follow the law of conservation. इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट उस समय अगर आपको समझ नहीं आया बाय द चांस, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ. काम करता हूँ, सबसे पहले ये सब रफ करता हूँ. इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है. ठीक है, ऑफ मैटर. ऑलराइट, तो ये लॉ क्या कहता है? मास इज नाइदर बीइंग created nor being destroyed. ओके, मतलब मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ठीक है, मास सिर्फ एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल केमिकल बाउंडेज, उसके केमिकल बाउंड चेंज हो जाएंगे, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी. वैसा हो सकता है मास के साथ, बट
the main thing is that my mass is neither been created nor been destroyed. मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसे ये फॉलो करना पड़ता है क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने ये लिया H2 plus O2, H2O, okay, so here we can see two molecules of oxygen and two molecules of hydrogen, okay, but here we can see only H2O where only hydrogen is getting, but oxygen is not getting the atoms, okay. So for this we have to balance it. It is not following the law of conservation of matter, so we have to balance it. Balancing कैसे करनी है? I think there are many ways to balance the equation, chemical equation, but I have the simplest form, which is firstly see how many elements are there. H O to the reactant side. This is the reactant side, and this is the product side. Okay, H O. So like here we can see two molecules of hydrogen, molecules, or you can say atoms, two atoms of hydrogen. So we write here two. Oxygen, two atoms. So we write here two. On the product side, hydrogen, oxygen. Of course, there will be this side elements is equal to this side elements. Okay. So here hydrogen 2, but oxygen here it is nothing. Nothing means 1. Okay. So we can see that here the hydrogen to the reactant side is equal to the product side hydrogen 2 2, but oxygen is different. So we multiply this with 2 to balance it. Okay, so after that the equation will look like this: H2 plus O2 results in 2H2O. Okay, so keep in mind that this 2 will also apply to H2. Okay, and here it is multiplication in this between, for like this it is multiply by this, multiply by this. So now oxygen is 2, but this hydrogen is 2 2s are, now it is 4, but this side it is 2. So now what we will do is that multiply this one with 2. Okay, so how much it will be? 2 2s are 4. Here it is hydrogen 4, so we add here 2 2s are 4. 4 hydrogen, 2 oxygen. Here 4 hydrogen, 2 oxygen. Here 4 hydrogen, 2 oxygen. So hence this equation is totally balanced. Okay, here are total 6 atoms. Here 4 plus 2, 6 atoms. So this equation will be the balanced equation. All right. So this is how balancing works. If you need more detailed version or more long version of this, make sure to comment. I'll make that too. Okay. Thank you for watching. Make sure to subscribe, and yeah, I'll see you in the next video.